Hello my boys, how are you? After a very long time I have come before you along with a new video with the same energy so that you may get benefit from it. I hope that you all of you are interested in viewing the videos and in the preparation of the board examination. So let us see in this video what is to be taught. In this video we will discuss the chemical bond. In the previous video I have started this topic. Now this comes to the chemical bond. What is chemical bond? किसी भी molecules में, just like you can take the example of hydrogen molecule in which two atoms of hydrogen are linked together. This linkage present in this molecule between two atoms of hydrogen is known as chemical bond. Here also, here is one metal and another non-metal. Here is also a linkage between the two atoms, different heteroatoms. So this link, what is the nature of the link? It is another matter of discussion. But this link, लगाव जो है या force of attraction between two atoms in a molecule present is known as chemical bond. So it is definition of the chemical bond, the force of attraction existing between two atoms due to which they are linked together in an atom is called chemical bond. किसी भी molecule से compound में दो atoms जिस force of attraction से जुड़े रहते हैं उस force of attraction को या link को chemical bond कहते हैं. We have taken two examples here. Now this will be cleared in the further study. Types of chemical bonding. First type of chemical bonding is electrovalent, and the another name of the chemical electrovalent bond is ionic bond. What is ionic bond? जाहिर सी बात है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड होगा तो नेचर ऑफ बॉन्ड बदल जाएगा, कैसे बॉन्ड बनते हैं. तो बॉन्ड बनने के, लिंक बनने के तीन साधन. एक साधन है, दो साधन हो सकते हैं, तीन साधन हो सकते हैं. पहला साधन ये होगा बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो एटम जुड़ जाएंगे, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दो एटम जुड़ जाएंगे, और बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो उस हालत में वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. दिस इज अनदर मैटर ऑफ डिस्कशन. नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड. द बॉन्ड which is formed between two atoms, generally in the between the metal and non-metal atoms, by transfer of electrons from one atom to another atom, due to which they are linked together by an electrostatic force of attraction, is called an electrovalent or ionic bond. बॉन्ड का वैसा टाइप जिसमें जो दो एटम्स के बीच बनता है, जिसमें एक एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे एटम में होता है, जिससे कि दोनों एटम ऑपोजिटली चार्ज हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है. जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है नेगेटिवली चार्ज. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसी का नाम है आयनिक बॉन्ड. तो समझ गए होंगे. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, मेटल एंड नॉन मेटल, इज नोन एज आयनिक बॉन्ड. नाउ लेट अस सी more clearly by taking few examples in the next phase. Now let us see examples of ionic bond formed in different types of compound, i.e. between metal and non-metal. Generally, ionic bond or electrovalent bond is formed between metal and non-metal atom. Now let us see some example which will clear you that how ionic bond is formed by transfer of electrons from one atom to another. एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन के जंप करने से
कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड, ये यहाँ शो किया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी सिखाया जाता है। नाउ यहाँ सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का सिंबल Na होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, एंड क्लोराइड बना है क्लोरीन से, क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। नाउ लेट अस टेक द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Sodium has valence electron 1, so it is easy for sodium to lose electron, 1 electron, and पेनल्टीमेट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये स्टेबल हो गए, नियॉन का स्ट्रक्चर हो गया। और क्लोरीन के साथ ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, 288 18, यानी आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है इनर्ट गैस का, तो ऑक्टेट पूरा हो गया, स्टेबल हो गए। हियर सी सोडियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैज 2 2 4 2 6 1 7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है, क्लोरीन को देता है, यानी लूज किया, ट्रांसफर हुआ सोडियम से क्लोरीन की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको पॉजिटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 पॉजिटिव। जो उसी तरह सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 1 यूनिट नेगेटिव, and 2 electron to 2 negative. Here sodium becomes positively charged and chlorine gains electron, hence it becomes negatively charged. We know that between the two charges, opposite charges, there is a force of attraction, electrostatic force of attraction acts, hence the two atoms get joined, get linked. Such linkage due to electrostatic force of attraction is known as ionic bond. In this way, between the sodium and chlorine atom, ionic bond is formed. Hence, we get the formula NaCl for sodium chloride, which is known as common salt. Now, come to the next example, calcium oxide, next compound. Here also you see that calcium, metal, oxygen, non-metal, metal non-metal के बीच बनने जा रहा है ionic bond. Here calcium has electronic configuration 2882 because its atomic number is 20. 8 तो 10 और 18 तो 20 इलेक्ट्रॉन्स हो। ऑक्साइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना कंपाउंड, इसलिए 26 होता है क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। So here we see that it is easy for calcium to lose 2 electrons in order to complete its octet like argon. So calcium will lose 2 electrons or give 2 electrons to oxygen because oxygen is deficient by 2 electrons to complete octet. Here you see that calcium has 2 electrons, valence electron, oxygen has 2 and 4, 2, 6. So electrons from calcium to oxygen goes by transfer. Calcium loses 2 electrons which is gained by oxygen. So calcium will become 2 unit positive charge and oxygen will get 2 unit negative charge. Here both the charges will be same in order to balance, and the net charge in a molecule is 0. Here again between two different charges, positive and negative, there is electrostatic force of attraction and hence ionic bond is formed. Here calcium oxide is formed by the ionic bond, so the formula is CaO. Now come to the magnesium chloride. Here magnesium, atomic number of magnesium is 12, electronic configuration 282, chlorine का 287 है, जान गए हैं, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्टेट इसका पूरा हो जाए, प्रीवियस पेनल्टीमेट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। The magnesium will lose 2 electrons to 2 different chlorine because one chlorine will get only 1 electron. Here you see in the case of sodium. So here in order to accept 2 electrons from the magnesium lost by it, there are 2 chlorine atoms required. Therefore 2 chlorine atoms are taken here. 1 electron goes to 1 chlorine and the next electron goes to second chlorine. Now the magnesium gets 2 unit positively charged and the individual chlorine atoms get negatively charged.
Now here you see the electrostatic force of attraction between this chlorine atom and magnesium and this chlorine atom and magnesium. That is, ionic bond is formed between magnesium and chlorine. Here two atoms are required, Cl2. Hence, in the formula it becomes MgCl2. It is clear here. Now I want to give you some task to practice well for the formation of ionic bond. So here we have given you problem to write the electronic dot structure like this in the case of these following 5 compounds. So you must find the electronic dot structure for the formation of ionic bond in the compound zinc oxide, ZNO, N2O, sodium oxide, potassium chloride, aluminum chloride and magnesium oxide. So you will certainly do that, because if you will do this practice, you will be perfect in establishing an ionic electrovalent bond between metal and non-metals. This is all about in this video. Wait for my next video in which the next type of chemical bond will be discussed. I hope that all of you will be interested in watching the video and hoping for the next useful video. Thank you very much for subscribing my channel and watching my videos.